सहित जोड़ी होती पूर्वतन वायुसेना अधिकारी एयर मार्शल दिलीप पट्टनायक जोड़ी होती। एयर मार्शल पट्टनायक स्वागत करी आपण को आलोचना को। ये शहबाज शरीफ ये जो मिछ ये अत्यंत हास्यास्पद। आपण भी आम सहित जोड़ी होते आपण भी शुणी शरीफ किभली भाव में कहते देशवासी को खुशी कराइबा जे भारतीय सेनार तोप को रफेल को सेमाने खसाई देइथिले। ये अत्यंत हास्यास्पद कथा। अच्छा तमे जदि आमे मिसिकी जदि गोटे एनालिसिस करिबा चारि पांचटा बिंदु सामना रे आसुची। प्रथम कथा हला जो हमरो रिस्पांस रिटेलिएटरी रिस्पांस ता करिलु आमे प्रथम दिनरी हम एम अचीव कर जाइतलु जेतरे कि 9टा आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करलु। से तापरे आमे या भी देखिचु कि से मानेकर बहुत क्षति हेची तांकर नॉन टेररिस्ट मानकर लाइफ जाइची तार फोटोग्राफ मध्ये अछि। किंतु जेहेतु पाकिस्तान सदाळे भाबुची कि से हमटू सुपीरियर अछि आ तांको निज पॉपुलेशन को किछि कहिबा भाव कारण तांकर एथर अनलाइक बालाकोट एथर प्रूफ आसी गला कि इंडिया होची सक्सेसफुली अटैक करिछि। सेही जगो तांके किछि मेजर्स नेले विदाउट थिंकिंग कि तार रेस्पॉन्स रे इंडिया कौन करिवो। तो हमें लास्ट 3-4 डेज रे या देखिलु कि एस्केलेशन हो ए स्थिति रे पहुंचला कि हमें जब फाइनली हमरो ब्रह्मोस यूज करलु और एयर लॉन्च्ड मिसाइल यूज करलु तांको ऊपर से क्षतिटा देखि कि तांके जानिले जे जिंस गुडा सब तांको एज पर एक्सपेक्टेशन ही नै। सेही जगो तांकर डीजीएमओ फोर्स हेले या भी कही पारंती कि अमेरिकन प्रेसिडेंट तांको एनएसए को कही कि प्रथम जेबे तांको प्राइम मिनिस्टर संग कथा हले से सुनिले नहीं तापरे से और कांटेक्ट करले आर्मी चीफ को से तांको बुझेले दी कथा आल्सो लिंक टू तांकर जो आईएमएफ लोन अछि एगुडा सब मिसई करी फाइनली तांकर जो फॉरेन मिनिस्टर थिले से अमेरिका को थैंक करले कि बिकॉज ऑफ अमेरिका हमें एबे गोटे संधि पाई जाउछु। सो 3:40 रे ताको डीजीएमओ फोन करिला व्हिच इज ए क्लाइम डाउन से माने करले आगो हमें इंडिया करी नै आ 6टा बेले एटा अनाउंस हला कि सीज फायर हो। किंतु विद इन 2 आवर्स से माने से सीज फायर को ब्रेक करके फायरिंग करबा आरंभ करले। सेटा होची पार्ट ऑफ ए ग्लोबल पावर गेम जेतरे कि चाइना भी आसुची। चाइना भी खुशी नथिला कि खाली अमेरिका को प्रशंसा कराला तापरे आउथर कथा वार्ता हला परे फाइनली अराउंड 10:30 बेले शहबाज शरीफ मध्य चाइना रो ना नेले ताका आर्मी ना नेले ऑल इज प्लान ऑफ पार्ट ऑफ देयर फोर्स्ड एडमिशन कि हमें जीती गलु। सो इट्स ए पार्ट ऑफ द गेम। तो हमें कमिंग बैक टू एनालिसिस ऑफ सिंदूर माने ऑपरेशन सिंदूर ओडिसा रे हमें सिंदूर बोली कहबो सिंदूर बोली कहबोनी। तो ऑपरेशन सिंदूर एनालिसिस हला हमें कौन गेन करू गोटे जिंस हला कि प्रायर टू ऑपरेशन सिंदूर हमें इंडस वाटर ट्रीटी रिमूवल ऑफ एम्बेसी स्टाफ नो ट्रेड नो पोस्टेज स्टॉपेज ऑफ एयर स्पेस एगुडा सब ऑलरेडी ही सारथला। किंतु गोटे जो डिसाइसिव स्टेप नेबार थला सेटा फाइनली स्ट्राइक्स रे हला 9टा जगह रे अटैक करी तांकर रिटेलिएटरी मेजर हमर रिटेलिएटरी मेजर हम सब जानिचु। मोस्ट ऑफ इट इज प्रोपेगेंडा बोथ फ्रॉम देयर मीडिया एंड देयर गवर्नमेंट कि हमें सब जीती गलु बोली। तो हमें कोन अचीव करलु हमें गोटे सिग्नल देलु कि तमे जदि किछि करिवो हमें एक्शन नबु। काली संध्या बेले खरा बेले हमें आगुटे डिसीजन नेचु व्हिच इज फार रीचिंग कि तमे आगरे किछि भी टेररिस्ट एक्टिव एक्शन करिवो तो हमें ट्रीट करिवो इतना बढ़िया एज एक्ट ऑफ वॉर। सो दिस इज वेरी नाइस सिग्नल नॉट ओनली टू पाकिस्तान इट होची सिग्नल आल्सो टू चाइना एंड आफ्टर सम टाइम इवन टू बांग्लादेश कारण इवन बांग्लादेश भी टिके कुदुची। सो तांको मध्ये उठे मेसेज जाईची दैट इज वन मेसेज व्हिच हैज गॉन। सेकंड कथा हला कि हमें कौन यूज करू हम पाखरे कौन पे अछि कि हम एबिलिटी बढ़ी
from 2014 onwards हमारा procurement process देखी देखी कि हमें ए स्थिति रे पहुंचीचु कि हमें जहाँ चाहिए जेबे भी चाहिए एटलीस्ट इन द नेबरहुड हमें सेया करि परिबो हमारा आर्म्ड फोर्सेस आर्मी नेवी एयर फोर्स रो कैपेबिलिटी एबिलिटी बढ़ी and to combine with it আমার পাখরে গোটে ଭଲ leader ଅଛନ୍ତି ଆମର army navy air force is very disciplined and capability wise the men behind the machine so not only the chiefs but the men behind the machine are fairly capable ତାଙ୍କ training ଭଲ ତାଙ୍କ discipline ଭଲ ଏ ସବୁ combination ଦେଖିକିରି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଯାହା ବି action ନିଆ ହେଇଛି in the last 72 to 96 hours everything has been done professionally to start with the first action not a civil terrorist jo karthala it is like a copybook action ए सबू सांगरे सांगरे लास्ट टाइम जब बालाकोट हेतला सेतिवाले परसेप्शन बैटल जो कहते मीडिया परसेप्शन बैटल सेतिवाले भारत सेते भलो करि नथला किंतु एथर जो जो प्रोसेस फॉलो करची दीटा लेडी ऑफिसर आस्तिले फॉरेन सेक्रेटरी आसिक जो ब्रीफिंग दोथले विथ प्रूफ एटा होची इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर इन इंडिया और एनी अदर कंट्री या भलिया आउ भलो नै और ऑल द टाइम हमर प्राइम मिनिस्टर इंटरैक्ट करथले सर्विस चीफ सागरे एंड इवन रिसेंटली एज दिन आगरे से कोन करछंदी कि जते सीनियर ऑफिसर्स थिले आर्मी नेवी एयर फोर्स रे दिल्ली रे तांको भी डाकी कि तांका संगरे भी कंसल्टेशन करछंदी जस्ट बिफोर वन डे बिफोर द सीजफायर these are all the signs of a true leader and this is how now what will happen now three things will happen first is as a country हमको prepare हो पड़ियो कि there will be lot of flack both from our opposition both from our naysayers कि एटा काहे केलानी सेटा काहे केलानी but suffice to say that it could not have been done better under the present circumstances that is one second is global player we have to keep in mind गोटे जिंस जे इंडिया रो मेन एम कोन अछि 2047 रे हमको गोटे विकसित देश हबार अछि for which economy matters relation with other countries matters and simultaneously हमको गोटे आर्म्ड फोर्सेस को एते स्ट्रांग करिवार अछि कि नेक्स्ट टाइम किछि हेले के उठेबनी आखि and third and most important जो हमें मैसेज पठेचु लास्ट ए जो कि any act of terrorism will be treated as a war सेटा होछि बहुत बड़ इंडिकेशन कारण पाकिस्तान रो डीएनए इटसेल्फ इज रॉन्ग इन द सेंस आमे जदि भाबुछु एटा करला परे आमे से माने आउ फ्यूचर रे करिबनी वी आर थिंकिंग रॉन्ग दे विल डू इट बिकॉज़ तकर डीएनए रे ही अछि हाउ टू ट्रबल और क्रिएट टेररिज्म in the neighborhood not only neighborhood say all over the world themane koruchuti so keeping that in mind I can see that maybe for 2 years 3 years kichi hapanai but after 3 years outhara gote mane uprising of or some terrorist attack will place but that is the time because of ame jaha ebe korichu seida will come into play straight up Rohila Indus water treaty or this will come off slowly airspace dhire dhire because at the end of it it is all economics it's about uh, how the countries interact with each other but I am very clear ये जो Indus water treaty अछि it is not because of only this action हमें 1.5 वर्ष 2 वर्ष आगरू ए कथाटा चले आसी because to start with जो 1960 रे जो ट्रीटी टा हेतला it was not in favor of our country एटा हमें रियलाइज करथुनु 1.5 वर्ष आगरू एटा एक्शन I don't foresee any problem as far as Indus water treaty is we have to be very careful about our internal issues. Internal issues माने हमको if we don't take care the internal issues एबे धीरे धीरे ऊपर को आसीबो whether it is Waqf board whether it is action on various other issues political issues एगुडा सब हमको we have to be very very careful and I would urge समस्तंको all citizens Indian citizens Odisha citizens to be very careful about rumor mongering and last point होची about press
प्लीज रिमेंबर एबेठू नेक्स्ट टू 2-3 मंथ पर्यंत बहुत कुछ इनपुट आसीबो. सम ऑफ इट मे बी राइट, सम ऑफ इट मे बी रॉन्ग, बट कौन हुए कि whenever there is a conflict दी तरफ रो लॉसेस हुए. ମୁଁ ଏହା କହୁନି କି ଆମର କିଛି ଲସ୍ ହେଇନି କି ତାଙ୍କର କିଛି ଲସ୍ ହେଇନି, ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କେତେଟା ଜାହାଜ ଆମର ଖସିଲା, କେତେଟା ଜାହାଜ ତାଙ୍କର ଖସିଲା, ତାଙ୍କେ କେତେ ଆଟାକ୍ କଲେ, କେତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ we have to take it with a pinch of salt by both, because whatever comes out may not be the truth. ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, 10 ଦିନ 15 ଦିନ ଲାଗିବ ଏଇଟାକୁ ସରଫେସ୍ ହେବାକୁ. ସେଇ ଜିନିଷଟା I would urge people to be patient. देन लास्टली मु या कहବାକୁ ଚାହୁଛି ଯେ ଏ जो action ଟା ନେଲା ନିଆ ହେଲା by India, this operation Sindhu, it has far reaching consequences as far as India's pragati is concerned, because we have shown to the world कि ଆମେ बहुत फुकी फुकी की कदम नेचु. We have not been aggressors. whole world या देखिछि, including अपने भी जा कहले जे UNO रो बॉस कौन कहले कि they are very happy. जे जो जो भी देशों को देखंतु, because as a civilization, that is as a country, we have never been aggressors, we will never be aggressors, but for some time till about 2010 when that Mumbai attack happened, ଆମେ କିଛି କରି ପାରିଲୁ ନାହିଁ. For that is a totally different political game. I will not get into it. But now we have reached a stage कि किए जदि आखि उठेके देखिबो आ आखि भी उठेबन, कारण बांग्लादेश जो धीरे धीरे उतरुथिला से भी एबे दिथर भाबिबो, पाकिस्तान 3 थर भाबिबो, और चाइना कि हम टू एट द मोमेंट in terms of ability slightly better अछि से भी भाबिबो. So that is the kind of signal this particular few days of action has given, and we have to thank our leadership, our armed forces, and most important, the janta of our country for having supported each and every action taken by our leadership.